basic problems of an economy. The basic problems of an economy are what to produce, how to produce, for who to produce, what provisions are to be made for economic growth. What to produce, since the resources are limited, every society has to decide which goods and services should be produced and how many units of each goods or services should be produced. So basically since resources scarce है, हमें डिसाइड करना होता है कि कैसे टाइप के गुड्स प्रोड्यूस होने चाहिए, कि whether to produce more guns or whether to produce more butter. How to produce? There are various alternative techniques of production a commodity. बेसिकली दो टाइप ऑफ टेक्निक्स होते हैं, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, लेबर इंटेंसिव टेक्निक. जिस सोसाइटी में लेबर सस्ता हो एंड अवेलेबल हो, फॉर एग्जांपल इंडिया, वो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज़ करेगा. एंड जहाँ पे कैपिटल यानी मशीन्स ज़्यादा हो एंड सस्ता हो, तो कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक यूज़ होगा. For who to produce, another important decision which a society has to take is for who it should produce. A society cannot satisfy each and every want of all the people. Therefore, it has to decide on who should get how much of the total output of goods and services. किसके लिए कितना बनाना है, और so they have to decide what provision should be made for economic growth. इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या क्या प्रोविजंस बननी चाहिए. A society has to decide how much savings and investment should be made for the future progress. So एक सोसाइटी अपने सारे रिसोर्सेज यूज़ अप नहीं कर सकती, सो इट हैज़ टू डिसाइड कि फ्यूचर के लिए कितना बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है. Okay, so the next topic is there are three types of societies: capitalist society, socialist. There are three types of economy: capitalist economy, socialist economy, mixed economy. Capitalist economy is basically जहाँ पे all the properties are owned and controlled by private individuals for profit. बेसिकली गवर्नमेंट कुछ कंट्रोल नहीं करता. जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं वो प्राइवेटली ओन्ड होती हैं, यानी प्रॉफिट के लिए वर्क करते हैं. इसके फीचर्स क्या है? राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, प्राइवेट प्रॉपर्टी ओन कर सकते हैं. फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, कुछ भी बिजनेस कर सकते हैं एज लॉन्ग एज इट इज़ लीगल. फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, freedom make the economic choice regarding consumption, work, production, exchange, etc. Profit motive, profit के लिए work करता है. Consumer sovereignty, consumer खुश रहता है as they get what they want. Competition is the main thing in this kind of society. Absence of government interference, government interfere नहीं करता. How do capitalist economy solve their central problems? Deciding what to produce. Deciding what to produce. The aim of an entrepreneur is to earn as much profit as possible. This causes businessmen to compete with another to produce those goods which consumers wish to buy. On the other hand, if consumers' demand for clothes decreases, its price would fall and profit would go down. In a capitalist economy, the question regarding what to produce is ultimately decided by consumers, who show their preference by spending on the goods which they want. So in a capitalist economy, what to produce consumer के preference से decide किया जाता है. And how to produce, as I said, जहाँ पे सस्ता हो, सस्ता लाइक क्या मिल रहा हो उसके हिसाब से होता है. अगर लेबर सस्ता हो तो वो यूज़ करते हैं, कैपिटलिस्ट सस्ता हो तो वो यूज़ करते हैं. For who to produce? In a capitalist economy, goods and services in a capitalist economy will be produced for those who have buying capacity. Higher the income, higher will be his buying capacity and higher will be his demand for goods in general. तो capitalist economy में जिसके पास पैसा उसके लिए produce करते हैं.
deciding about consumption, saving and investment, what provisions are to be made, कैसे are done by consumers and investments are done by entrepreneurs. Basically, investment decisions depend upon the rate of return on capital. The greater the profit expectation, the greater will be the investment in a capitalist economy. Similarly, consumer savings, among other factors, are governed by the rate of interest prevailing in the market. तो कंज्यूमर का जो सेविंग्स है वो डिपेंड करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, और जो इन्वेस्टमेंट है वो रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल पे डिपेंड करेगा. एंड मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्ट इकोनॉमी. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी सेल्फ रेगुलेटेड होता है. The existence of private property and driving force of profit motive results in greater efficiency, incentive out work. The process of economic growth is likely to be faster under capitalism. This is because the investor try to invest in basically you know the merits. Read कर लेना एक बार. demerits also you know, read कर लेना एक बार. Socialist economy. Socialist economy is the type of economy जहाँ पे सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल करती है. The concept of socialist economy was propounded by Karl Marx and Friedrich Engels in their Communist Manifesto published in 1848. ये याद रखना. So the nature and features are collective ownership. All the properties are owned by everyone. Economic planning. गवर्नमेंट प्लान करती है इकोनॉमी में क्या होना क्या नहीं होना. एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस. कंज्यूमर प्रेफरेंस की बेसिस पे नहीं डिसाइड किया जाता क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए. रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली इक्वल है. मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म और मार्केट फोर्स का ज़्यादा प्रेजेंस ये नहीं है, रोल नहीं है. एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. सिंस ये वाला सोसाइटी प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करता. एब्सेंस ऑफ कंपटीशन. मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म वही रीड कर लेना. डीमेरिट्स रीड कर लेना. देन मिक्स्ड इकोनॉमी में ये दोनों होते हैं. फीचर्स को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक प्रॉपर्टी. ये सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जो ये करती है लाइक प्रॉफिट के लिए वर्क करती है. पब्लिक सेक्टर जो गवर्नमेंट से करती है. कंबाइंड सेक्टर जॉइंट सेक्टर भी बोलते हैं. हाँ दोनों के मेरिट्स होते हैं. दैट्स ऑल दिस चैप्टर. कुछ और भी बोलना चाहिए. I guess ओके. सो लास्ट थिंग इतना याद रखना है कि स्कार्सिटी का डेफिनेशन क्वेश्चन नंबर 37 स्कार्सिटी का डेफिनेशन रॉबिन्सन ने दिया था. स्कार्सिटी डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय रॉबिन्सन. द डेफिनेशन ऑफ साइंस व्हिच डील्स विथ वेल्थ ऑफ नेशन was given by Adam Smith. Adam Smith. That's all in this chapter. Done.